अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। और वीडियो के आगाज़ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको मिलता रहे। अभी हम जिस टॉपिक पे सबसे पहले बात करेंगे वो है ये कोनिका मिनोल्टा bizhub की स्विचिंग ऑन एंड ऑफ़ करने पर हमारी वीडियो होगी। कि जब सबसे पहले आपने मशीन को ऑन किया, ऑन करने के बाद इधर से ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के बाद आपने इसको कनेक्ट कर दिया। सो आफ्टर कनेक्शन नाउ द मशीन इज़ ऑन पावर सेविंग मोड, so I have to hit this one start button, so the machine is now in functional position. So the main point is this: how we can make the switch on and off of this one machine. So for that one, remember that one, this one is a main switch here. Okay, whenever you have switched off, जब भी आपने स्विच ऑफ करनी है मशीन, सो स्विच ऑफ करने के बाद या तो द वन थिंग इज़ दिस, यू जस्ट हैव टू क्लोज दिस वन, ऑफ दिस वन बटन, ओके, एट दिस वन 0. Either you have to be switched off from the main board, then after that you should make sure that you have to switched off it again. Okay, now in this one position. Why? This is the safety measurement of this one machine, because the lot of issues means the uh, issue generated in the main board of the machine due to such sort of the that issues means when the user is working on this the machine, and during this one the light has gone, so after that he is not be able to switch off this one button there. So whenever the light will come back, you just have to go the switch on the from main board. अगर लाइट चली जाए तो आप सबसे पहले डायरेक्ट लाइट आए तो वहाँ से ऑन करेंगे मेन बोर्ड से, तो आपके इसके बोर्ड का जलने का बहुत ख़तरा होता है। लिहाजा जब भी इसको बंद करें तो यहाँ से स्विच इसको ज़रूर ऑफ़ कर लिया करें, और जब आप ऑन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्विच ऑन द फ्रॉम मेन बोर्ड, then after that go there and switch on this one button there in this one position. Okay, now the machine is going to be started. Thank you so much. Allah Hafiz.